Hello students, last time we discussed the interval form. First we repeat the interval form. That's interval means a set of real numbers between any two real numbers is an interval. A set of real number. For example के यहाँ पे मैं एक सेट बना रहा हूँ, तो the set of real number a and b are the real numbers, so we can say that a is belongs to R. It means a the member of real number and b is also belongs to R, although the member of a real number. So the interval of a set of real numbers, there are so many real numbers between a and b, so we can say that's a set of real numbers between any two real numbers. That means a and b are any two real numbers, and there are the infinite real number between these two real numbers, or a set of real numbers of any two between any two real numbers, that is called a interval. And we discuss the types of interval. For example, that's a closed interval. So closed interval a and b, see the definitions of closed interval is if a belongs to R, b belongs to R, and a is less than b, the set of all real numbers between a and b, including a and b, that is called closed interval. Including a and b both are including in the set of the real numbers, it is called a closed interval. And with big bracket we can write down it's in big bracket, and a and b are including in the set of real numbers, that is called a closed interval. Clear है? Next the open interval. So same again means if a belongs to R, b belongs to R, means b is also the member of a belongs to R, b belongs to R, a is less than b, the value of a is less than b, and all the real numbers between a and b, not including a and b is called open interval. And we discuss the notation form, so I am not discussing here the notation form. Then the closed open interval. So with the help of bracket we can understand a is including but b is not including. Again, if a is belongs to R, b is belongs to R, and a is less than b, then the set of all the real numbers between a and b, including a but not including b, is called closed open interval. And last one is open closed interval. That's open and closed. A and b, we know very well that's a open, that means not including, and closed that means including. सिंपल लैंग्वेज में याद रखना है तो क्लोज यानी पैक कर दो, वो कहीं बाहर नहीं जा सकता है, इसलिए उसको उसमें इंक्लूड कर दिया है. ओपन यानी वो ओपन है, बाहर जा सकता है, दैट मीन्स वो नॉट इंक्लूडिंग है. सिंपल है मेथड, लर्न मीन्स रिमेंबर रखना हो तो इजीली, दैट्स अ टेक्निक. ओके, नाउ विल डिस्कस open close interval. Again, if a belongs to R, b belongs to R, and a is less than b, and then all the set of all the real numbers a and between a and b
not including a but including a, b is called open close interval. So yesterday we discussed, or in the last lecture we discussed the types of interval. Today we are going to discuss the another topic, and it's a modulus. That's a very simple modulus. तो in modulus, see, if कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, फिर मीन्स वो चेक करेंगे. इफ x belongs to r, x belongs to r, then the variable x is belongs to r है. Now module x is equal to, normally we know that any value in a model becomes the positive, but if a variable x variable suppose है, it's become x and the module x is become minus x, then this is the important thing. वैल्यू वेरिएबल जो है मीन्स यहाँ पे वो डिपेंड कर रहा है कि मीन्स यहाँ पे मॉड्यूल में वेरिएबल x पॉजिटिव है या फिर वेरिएबल मीन्स क्या है, नेगेटिव है. इफ द वेरिएबल इज पॉजिटिव देन इट्स कॉल्ड x, it's become x when if x is greater than or equal 0. समझ लो कि x की वैल्यू 0 एंड ग्रेटर देन 0 है, तो इट्स बिकम फ्रॉम मॉड्यूल मीन्स इट्स बिकम पॉजिटिव ऑलवेज, बट द वैल्यू ऑफ x, समझ लो, देन आफ्टर वैल्यू ऑफ x इज 0 एंड ग्रेटर देन 0, इट्स बिकम अ positive. But if the value of x is negative, x is less than 0, then it's become negative. एक एग्जाम्पल लेके और क्लियर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सपोज द वेरिएबल x मॉड्यूल, देन द आंसर इज इक्वल टू x. नाउ पुटिंग x is equal to 2, तो 2 is greater than 0, so the answer is 2. The module x is equal to x, and putting x is equal to -1, then answer is equal to -1. So till 9 और 10th मीन्स हम सिर्फ रियल नंबर्स हम स्टडी कर रहे थे इन मॉड्यूल, नॉट अ वेरिएबल. अगेन मीन्स एक इंपॉर्टेंट चीज समझ लो, -1 हुआ, दैट्स इट्स इन मॉड्यूल इट्स बिकम अ 1, -4 बिकम 4, देन +1 बिकम 1, 4 बिकम 4. That's a real number. 1, -1, -4, 1, 4 are the real numbers, and any real numbers become the positive. किसी भी real numbers का सपोज आप मॉड्यूल वैल्यू ले रहे हो तो is always positive. Keep one thing in mind, that is the variable x and it's become, for example, कि x है but the value of x is positive, then the x is the value, it means the variable x, the value of x become positive, and the x is negative, then value of x, it means x become the negative for variables. वो डिपेंड्स कर रहा है मीन्स x की वैल्यू क्या है वेरिएबल के लिए, बट फॉर रियल नंबर्स, और ये चीज़ें वेरिएबल के लिए है. नाउ फॉर रियल नंबर्स, सी, फॉर एनी रियल नंबर्स we discuss for variable. Now for real number it's always become positive. For real numbers is always non-negative or a positive, is always non-negative, it means positive value. For example, -3, so it's become 3, -8, that's become 8, 1, it's 1, 7, it's become 7. Clear? दिस वन वी नो वेरी वेल फ्रॉम द बिगिनिंग. ये कॉन्सेप्ट हमारा पहले से क्लियर था, बट दिस वन इज द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट. व्हेन अ वेरिएबल वर्ड यूज कर रहा हूँ, नॉट अ रियल नंबर, इट्स अ वेरिएबल, देन इन मॉड्यूल वेरिएबल x become x, but the value of x is greater than 0 and 0, it's become a positive value of variable. But when the value of variable is less than 0, it means negative, the value of variable becomes negative. तो value of variable become positive or negative
but value of real numbers in module is always positive, it means non-negative. Keep one thing in mind, this one the concept. Now we'll discuss more. Meaning of module x minus a less than delta. It is say delta. Now using the definition of मॉड्यूलस की फॉर्मूला मीन्स डेफिनेशन हम स्टडी कर रहे हैं. मॉड्यूलस की मीन्स क्या थी यहाँ पे कि इफ x इज ग्रेटर देन 0 एंड x इज लेस देन 0, तो यूजिंग दिस फॉर्मूला मॉड्यूल x माइनस a लेस देन डेल्टा इज इक्वल टू x minus a less than delta if x is greater than or equal a. The value of x is greater than, x की वैल्यू a से greater than है, then we can subtract x minus a. A is subtracted from the variable x, and if a is greater than x, then a minus x is less than delta. So or we can say x is less than a plus delta. How? तो सिंपली a यहाँ से ट्रांसफर कर दो, देन इट्स माइनस बिकम पॉजिटिव, सो x इज लेस देन डेल्टा. ये कैसे हुआ है चलो वो चेक कर लेते हैं. x माइनस a लेस देन डेल्टा, सी हियर x माइनस a लेस देन डेल्टा. अब a माइनस यहाँ पे ट्रांसफर कर लो तो x इज लेस देन माइनस a बिकम प्लस, तो a प्लस डेल्टा. सो वी कैन से x माइनस a लेस देन डेल्टा और x इज लेस देन a प्लस डेल्टा, बोथ आर करेक्ट. और कंडीशन सेम है इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल a, ये दोनों में कंडीशन सेम है. देन सेकंड थिंग्स, व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज लेस देन a, अगेन x माइनस a less than delta if a minus x, because here we considers the a is greater than x or x is less than a. When the value of x is less than a, x की वैल्यू a से कम है, then a minus x less than delta if x is less than a, और माइनस x यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दो या फिर मीन्स डेल्टा को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लो एक, तो दैट्स बिकम a माइनस डेल्टा इज लेस देन x. a माइनस डेल्टा इज लेस देन x, और वी कैन राइट डाउन x इज ग्रेटर देन a माइनस डेल्टा. बोथ आर करेक्ट है, दोनों का मीनिंग सेम है. ग्रेटर देन वाली जो साइन है वो कहाँ पे है, x साइड पर. ये कब पॉसिबल है, ऑल्सो इफ x इज लेस देन a. अगेन एक बार रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा क्लियरली. मीनिंग ऑफ मॉड्यूल x माइनस a लेस देन डेल्टा, यानी वेरिएबल में से, अभी हमने डिस्कस किया था कि वेरिएबल मीन्स है यहाँ पे x, उसमें से सपोज के कोई वैल्यू हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो पर्टिकुलर यानी वैल्यू से लेस देन डेल्टा, यानी डेल्टा से मीन्स लेस हो रही मॉड्यूल. तो मॉड्यूल x माइनस a लेस देन डेल्टा इज इक्वल टू x माइनस a लेस देन डेल्टा. वेरिएबल है दैट्स वाई पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉसिबिलिटी है वो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं. x माइनस a लेस देन डेल्टा इफ x इज ग्रेटर देन, वी सब्सट्रैक्टेड a फ्रॉम x व्हेन x इज ग्रेटर देन a. x की वैल्यू a से मीन्स हायर होनी चाहिए तो ही हम मीन्स x में से a को सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं है. सो दैट्स वाई x इज ग्रेटर देन और इक्वल a. x की वैल्यू a या फिर a से ग्रेटर होनी चाहिए. सो x माइनस a इज लेस देन डेल्टा इफ x इज ग्रेटर देन a, और वी कैन से a मैंने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, साइड चेंज कर रहा हूँ, तो x इज लेस देन a प्लस डेल्टा.
एंड द सेम वे x माइनस ए लेस देन डेल्टा, x माइनस ए लेस देन डेल्टा यहाँ पे मीन्स ये प्रूव किया है, x इज लेस देन -1 यहाँ पे ट्रांसफर कर लो तो माइनस बिकम पॉजिटिव यानी कि प्लस हो जाएगा, और a प्लस डेल्टा व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल a. एंड द सेकंड थिंग a माइनस x इज लेस देन delta. Here the x is less than delta, that's why x is subtracted from the a. x की वैल्यू हम a से सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं because a is greater than x is less, और a minus delta less than x, और x is greater than a minus delta when x is less than a. तो ये मीन्स मॉड्यूलस फॉर्म है. तो सिंपली हम मॉड्यूलस फॉर्म को इजीली याद करेंगे. तो मॉड्यूलस फॉर्म से इंटरवल फॉर्म में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेना कि दैट्स हमारा मॉड्यूलस फॉर्म है. यहाँ पे मॉड्यूलस x माइनस ए लेस देन डेल्टा, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो समझ लेना है. इम्प्लाइज उसकी इफेक्ट जो है वो हम समझ रहे हैं. तो इम्प्लाइज क्या हो रहा है, x बिलोंग्स टू, x किस में बिलोंग्स कर रहा है, तो द वैल्यू ऑफ x इज a माइनस डेल्टा या फिर a प्लस डेल्टा, दैट इज दी, ये हमारा मॉड्यूलस फॉर्म है और इसकी इम्प्लाइज उसकी इफेक्ट हो रही है इन इंटरवल फॉर्म a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा. विल यूज इन अवर प्रॉब्लम्स दिस फॉर्मूला. अगेन ये अच्छे से समझना है कि a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा आ गया. आंसर कहाँ से ये, तो ये चेक करते हैं. यहाँ पे चेक करो, दैट्स a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, द वैल्यू ऑफ x इज लेस देन a प्लस डेल्टा. वैल्यू क्या हो रही है, x की वैल्यू या तो हो सकती है a प्लस डेल्टा लेस देन a प्लस डेल्टा, और द सेकंड रिजल्ट इज द वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन a माइनस डेल्टा. इट मीन्स द वैल्यू ऑफ x is between a minus delta and a plus delta. So we can say the value of x is the interval of a minus delta and a plus delta. We know very well in interval कि मीन्स एक पर्टिकुलर वैल्यू किसी भी सेट के यानी कि रियल सेट के नंबर में है तो इट शोज द इंटरवल. सो द वैल्यू ऑफ x की जो वैल्यू है वो लेस देन a प्लस डेल्टा है. सो a प्लस डेल्टा से लेस और a माइनस डेल्टा से ग्रेटर है, यानी कि द वैल्यू बिलोंग्स टू, दैट्स व्हाई वी कैन से द x बिलोंग्स टू द इंटरवल a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा. तो ये मीन्स एक इम्पोर्टेंट है. एंड द नेक्स्ट बहुत ही सिंपल है, नेबरहुड फॉर्म है, एंड दैट्स वेरी सिंपल फॉर्मूला के बेसिस पर. एंड द थर्ड वन इज a neighborhood and this one is the very simple but we'll discuss. Then any open interval we know very well. Any open interval, it means the अगेन मीन समझ लेना ये ओपन इंटरवल है एंड a and b इज नॉट इंक्लूडेड, द वैल्यू ऑफ a and b इज नॉट इंक्लूडेड इन एनी ओपन इंटरवल कंटेनिंग a and a belongs to R, that's a is the member of the real number, is called a neighborhood of a. तो नेबरहुड फॉर्म को भी मीन्स हम इंटरवल एंड मॉड्यूल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. विल सी डिस्कस द डेल्टा इज एंड डेल्टा मीन्स एनी नॉन नेगेटिव नंबर्स, कोई एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स है. डेल्टा नेबरहुड ऑफ ए.
डेल्टा दैट मीन्स अगेन रिपीट कर रहा हूँ एनी नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, तो डेल्टा नेबरहुड ऑफ ए. नाउ इफ ए बिलोंग्स टू इफ ए बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स ए हमारा कोई एक रियल नंबर्स का ही मेंबर है, एंड डेल्टा इज नॉन नेगेटिव रियल नंबर, डेल्टा इज नॉन नेगेटिव रियल नंबर, डेल्टा इज नॉन नेगेटिव रियल नंबर, then the open interval a minus delta and a plus delta is called delta neighborhood of a, delta neighborhood of a. यानी कि किसी भी नॉन नेगेटिव नंबर्स को एक इंटरवल हम फाइंड करेंगे, और दैट इंटरवल मीन्स जो भी वैल्यू मीन्स मिल रही है उसमें से a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा को कंसीडर नहीं करेंगे. वाई? बिकॉज इट्स अ ओपन इंटरवल. वो क्या है हमारा? ओपन इंटरवल है. तो वी नो वेरी वेल इन ओपन इंटरवल a बिलोंग्स टू r, b बिलोंग्स टू r, a इज लेस देन b, and then all the set of all real numbers not between a and b, not including a and b, that means not including the both value, that is called a open interval. So we can say the a minus delta and a plus is not included, is called the delta neighborhood of a. यानी delta means क्या है? तो delta means a का neighborhood हो रहा है, उसकी वैल्यू नियर बाय दी a है, that is called a neighborhood of a, and it is denoted by n shows the neighborhood, and delta is the neighborhood of a delta. So delta is the neighborhood of a. Clear? Now from the neighborhood we can find both the values. We know very well that's a open interval, and a minus delta and a plus delta is the form of इंटरवल फॉर्म है वो हमारा. नाउ n इज द नेबरहुड ऑफ a डेल्टा, तो वी कैन फाइंड a एंड डेल्टा. द वैल्यू ऑफ a एंड डेल्टा, द x इज सच दैट a माइनस डेल्टा लेस देन x लेस देन a प्लस डेल्टा, एंड मीन्स जो हमारा x मेंबर है वो किस में से होना चाहिए? रियल नंबर. तो x बिलोंग्स टू r. It is the, we know very well exactly this is the interval form, and to convert in a modulus we know very well a minus delta and a plus delta, then the value of x between the particular value or a particular interval. So x is such that module x minus a less than delta. We proved in our डेफिनेशंस, जब भी मॉड्यूल वाला फॉर्म किया उसमें हमने फाइनल किया था कि द वैल्यू इज बिटवीन a माइनस डेल्टा एंड a प्लस डेल्टा व्हेन x इज ग्रेटर देन डेल्टा और a, एंड a इज ग्रेटर देन x इन बोथ केस, और x इज लेस देन a और x इज ग्रेटर देन a. सो द आंसर इज, और x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r. So delta neighborhood of A can be expressed in the following different ways. delta neighborhood को मीन्स हम तीनों के तीनों फॉर्म में डिफरेंस यानी कि मेंशन कर सकते हैं. Then one is neighborhood, see one is neighborhood. ये तीनों के तीनों फॉर्मूला समझ लो तुम. नेबरहुड फॉर्म है तो उसकी फॉर्मूला क्या है? n a डेल्टा. देन इंटरवल फॉर्म ये कॉन्सेप्ट थे आगे, मीन्स वो तुम्हें प्रूव नहीं करने हैं, बट ये फॉर्मूला तुम्हें मीन्स माइंड में क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये हम प्रैक्टिकली एग्जाम में डायरेक्ट ये फॉर्मूला से सॉल्व करने वाले हैं. सो ये फॉर्मूला तुम्हारे लिए मीन्स सभी इंपॉर्टेंट है, समझ लेना. नेबरहुड फॉर्म जैसे भी मीन्स ओके, मीन्स कन्वर्ट इन अ नेबरहुड फॉर्म और फाइंड द नेबरहुड फॉर्म. देन द डेल्टा इज द नेबरहुड ऑफ a. देन इंटरवल फॉर्म,
तो a माइनस डेल्टा एंड a प्लस डेल्टा, एंड मॉड्यूलस फॉर्म, एंड मॉड्यूलस फॉर्म है हमारा, तो मॉड्यूलस x माइनस ए लेस देन डेल्टा। ये तीनों के तीनों फॉर्मूला तुम्हें अच्छे से लर्न करनी है, समझ लेना। ये तुम्हारे लिए IMP है। ये फॉर्म है तुम्हारे नेबरहुड फॉर्म, इंटरवल फॉर्म एंड मॉड्यूलस फॉर्म। तो ये हमारे लिए फॉर्मूला हैं और इसी फॉर्मूला से हम जितने भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करने वाले हैं। नाउ we'll see the problems in our next lecture. So thank you very much.